Today we have class metric English book. This is Syntax board book. And the unit we are doing today is unit number 1, the voice caliph. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. It is on page number 3, 4 and 5. So let's start. The voice caliph. Caliph Harun Rashid was very popular with his people. खलीफा हारून रशीद अपने लोगों में बहुत ही मशहूर थे. He was very concerned about their problems and their welfare. वो हमेशा लोगों के प्रॉब्लम्स, मसाइल और उनकी फलाह बहबूद के लिए परेशान रहते थे. At night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. रात के वक्त वो भेष बदलकर बगदाद की गलियों में घूमा करते थे. He would mingle with common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. रात वो लोगों से मिला करते थे उनके मसाइल जानने के लिए. He was also known and respected for his justice and wisdom. वो अपनी जहानत और इंसाफ के लिए भी बहुत मशहूर थे. One day when he was holding court, the Qazi brought two men before him. एक दिन जब वो अपनी अदालत में बैठे थे, काजी दो लोगों को लेकर आया. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen. उनमें से एक को अच्छे कपड़े पहने थे और वो इज्जतदार शहरी लग रहा था. While the other was in rags and seemed to be a beggar. और दूसरे को फटे कपड़े पहने थे और वो कोई भिखारी लग रहा था. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. इन दो लोगों के साथ एक खूबसूरत सफेद घोड़ा भी लाया गया. The Qazi approached the Caliph and said, O leader of the faithfuls, I have brought before you a dispute which I have not been able to settle. मैं एक मसला लेकर आया हूँ जो मुझसे हल नहीं हो रहा. It is difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will be able to resolve it in just and fair manner. लेकिन मुझे भरोसा है कि अपनी नॉलेज से आप ये मसला हल कर दो. What is the dispute? asked the caliph. क्या मसला है? खलीफा ने पूछा. These two men are fighting over this horse. ये दो लोग इस घोड़े पर लड़ रहे हैं. Each one of them claims and swears that this horse is his. हर कोई दोनों ये कह रहे हैं, दावा करते हैं कि ये घोड़ा उसका है. Step forward, the caliph ordered the well dressed man. खलीफा ने जिस आदमी को अच्छे कपड़े पहने थे आगे आने के लिए कहा. And let's hear what you have to say. हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो. The man said to the caliph, O leader of faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. तो भी मैं कहूँगा वो सब सच. This morning when I was riding to the city, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर घूम रहा था शहर में, I saw this beggar limping along ahead of me. मैंने इस फकीर को लंगड़ाते हुए देखा. On hearing the sound of my horse hoof, मेरे घोड़े के कदमों की आवाज सुनकर, he turned round and motioned me to stop. इसने मुझे रुकने का इशारा किया. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. इसने मुझे सिटी गेट तक जाने के लिए घोड़े पर जाने के लिए कहा. He was lame, वो लंगड़ा था. I felt sorry for him, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा. So I pulled him up behind me on the horse. मैंने इसे अपने पीछे बिठा दिया. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. I stopped and turned round to help him to get down. मैं पीछे मुड़ा इसको नीचे उतरने में मदद करने के लिए. He refused to dismount. इसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया. I was puzzled and gently told him to get down. मैंने इससे नीचे उतरने के कहा. बस because he had reached the city gate.
He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. इसने दावा किया कि ये घोड़ा इसका है. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. मैं इससे इसका घोड़ा छीनना चाह रहा हूँ. The, the caliph then turned to the man in rags and said, "What do you have to say?" फिर खलीफा ने उस फकीर से कहा कि तुम्हें क्या कहना है. The beggar limped forward and said, "O leader of the faithfuls, you are helper and the guardian of the poor." फकीर आगे आया और कहा, गरीबों, आप गरीबों के मददगार हैं. You are wise and just caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this man. मुझे इस आदमी से बचाएं. I swear that this horse belongs to me. मैं कसम खाता हूँ ये मेरा घोड़ा है. You just be thinking, आप सोच रहे हो, like everybody else in the court, how a beggar like me can afford to buy and keep a such fine horse. आप बाकी लोगों की तरह सोच रहे हैं कि फकीर कैसे ऐसा घोड़ा रख सकता है. Let me tell you that it is because of this horse that I am in the rags. ये इस घोड़े की वजह से है कि मेरा ऐसा हाल हुआ है. Whatever money I had, I spent on this horse. जो भी पैसे मेरे पास थे, मैंने इस घोड़े पर लगा दिए. This morning, as I was walking to the city on my horse, आज सुबह जब मैं शहर में अपने घोड़े पर जा रहा था, I noticed this man walking along the road. ये आदमी रास्ते पे जा रहा था. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse. इसने मेरा घोड़ा मुझसे उधार मांगा. For he was in great hurry to reach the city. इसे शहर जाना था. Of course, I could not lend my horse to complete stranger. मैं अपना घोड़ा किसी अजनबी को नहीं दे सकता था. However, I decided to help him and let him ride my horse. Well, I sat behind. मैंने इसकी मदद करने के लिए सोचा और इसे घोड़े पर अपने साथ चढ़ा दिया और इसके पीछे बैठ गया. As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. जैसे हम वहां पहुंचे, इसने मुझे नीचे उतरने को कहा और कहा कि घोड़ा मैं इसे दे दूं. He said that such a fine horse should not belong to the beggar. इसने कहा इतना अच्छा घोड़ा किसी फकीर का नहीं हो सकता. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. वरना ये मुझे जबरदस्ती नीचे उतारेगा. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like मी. कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा कि ये मेरा घोड़ा है. They would only make fun of me. लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी मदद करें और मुझे मेरा घोड़ा वापस ले. I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi. Caliph ने कहा कि ये केस इतना मुश्किल नहीं है. It can be decided in a minute. ये 1 मिनट में डिसाइड हो जाएगा. Tell these two men to place their hands on the horse. इन दो लोगों से कहो कि अपना हाथ घोड़े पर रखें. One by one, let the beggar do first. पहले उस फकीर से कहो. When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like touch of his hand. जब फकीर ने घोड़े को हाथ लगाया, घोड़ा झिझकने लगा जैसे इसको पसंद नहीं आया. Next, the rich man was asked to touch the horse. उसके बाद उस अमीर आदमी ने घोड़े को हाथ लगाया. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. घोड़े ने पसंदीदगी के साथ आवाज निकाला जब अमीर आदमी ने इसे हाथ लगाया.
This horse belongs to him, pronounced the caliph. खलीफा ने कहा कि ये घोड़ा इसका है. Give the horse to its master. Then the caliph turned to the beggar and said, "You are a liar and a wicked man." खलीफा ने फकीर से कहा कि तुम एक झूठे इंसान हो. You tried to rob an honest and respectable citizen. तुम इसे छीनना चाह रहे थे. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman. मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम मुझसे माफ. The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, "Please forgive me. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belonged to me." मैंने झूठ बोला कि ये घोड़ा मेरा है. आप मुझे माफ कर दो. The rich man, being kind-hearted and generous, readily forgave the beggar. अमीर आदमी ने फकीर को माफ कर दिया. Not only that, he took his purse and gave him a handful of gold coins और उसे सोने के सिक्के दिए. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. वहां मौजूद हर इंसान इस एक्शन से खुश हुआ.